बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डेवलपमेंट के आज के मॉड्यूल में हम दो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ Gesellschaft and Gemeinschaft. Gemeinschaft and Gesellschaft are both sociological theories developed by German sociologist Ferdinand Tönnies, describing two normal types of human association. Gemeinschaft is social association in which the individuals are inclined toward social community. Collectiveness की बात है यहाँ, rather than their own individual wants and needs. ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हैं. एक में हम बात करते हैं कि कम्युनिटी की तरफ, कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि they are more tilt toward their own needs and wants. Gesellschaft is a civil society in which the individual needs are given more importance than the social association. वो अपनी जरूरतों को ज्यादा तवज्जो देते हैं as compared to लोगों की, as a community. Ferdinand Tönnies introduced the concept in his book in 1887. Tönnies present these as analytic concept which he found useful for studying the differences between kinds of rural peasant societies that were being replaced across Europe by a modern industrial ones. Concept ये था कि rural society में हम ज़्यादा बात करते हैं collectiveness की, whereas in modernization, modern society में हम बात करते हैं individualism की और अपनी ज़रूरतों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं as compared to collective चीज़ों के ऊपर. Gemeinschaft is known as community, whereas Gesellschaft is known as society. Gemeinschaft is a German word which is translated as community and mainly emphasizes common mores wherein the individual believe in appropriate behavior and responsibility of each other to the association instead of focusing on individual interest and needs. Tönnies believed that family was the perfect example of Gemeinschaft. यानी फैमिली में हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे पर तवज्जो देते हैं. सो ये एक Gemeinschaft की बहुत अच्छी जो है वो एग्जाम्पल है. Gemeinschaft refers the individual bound together by common norms, often because of shared physical space and shared beliefs. Familial ties represent the perfect form of Gemeinschaft, although religious institutions are also a classic example of this type of relationship. Such groupings based on feelings of togetherness and mutual bond are maintained by the members of the group, who sees the existence of the group as their key goal. Characteristics of these groups include slight specialization and division of labor, strong personal relationship, and relatively simple social institution. Gesellschaft translated as a society. थोड़े से बड़े लेवल पे हम बात करते हैं, कम्युनिटी से निकलकर सोसाइटी की बात करते हैं. Mainly focus on individual interest rather than large association. There is no shared mores concept involved in this type of association, as a large association is not given prime importance. The individual of the society act according to their own interest. हर एक अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है, ना कि लोगों के इंटरेस्ट को भी देखता है. Modern businesses are good example of Gesellschaft association. Gesellschaft, frequently translated as society, refers to the association in which self-interest is the primary justification. यानी हम सिर्फ अपनी इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं. For membership, a modern business is a good example of an association in which individual seeks to maximize their own self-interest
and in order to do so an association to coordinate effort is formed. यानी अगर हम किसी के साथ मिलकर भी काम करते हैं तो उसमें हमारे अपने इंटरेस्ट जो है उनको इम्पोर्टेंस देते हैं. हम किसी के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं या एक एसोसिएशन बनाते हैं तो उसमें जो बेसिक जो है वो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं. Characteristics of these group include highly calculated divisions of labor, impersonal secondary relationship. यहाँ पे relationship जो है वो impersonal है बल्कि professional relationship है. And strong social institutions. Such groups are sustained by their members' individual aims and goals. The equilibrium in Gemeinschaft is achieved through morals, conformism, and exclusion, which is social control, while Gesellschaft keep at equilibrium through police, laws, tribunals, and prison. क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों की बात होती है जो अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और समटाइम्स ये होता है कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए हम दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिटन रूल्स की जरूरत पड़ती है. एमिश कम्युनिटीज जो हैं अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर, वो जो है वो Gemeinschaft की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. वेयर एज म्यूनिसिपैलिटीज जो है आर द टिपिकल type of Gesellschaft. Rules in Gemeinschaft are implicit while Gesellschaft has explicit or written rules. So ये दो एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट थे जो जिसके मुतालिक आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा. Thank you very much.